विभिन्न प्रकार की आगजनी की घटनाओं के कारणों और उनसे बचाव के उपायों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विद्युतीय लाइनों के सर्किटों, बिजली के उपकरणों, रासायनिक पदार्थों और धूम्रपान से होने वाली आगजनी की घटनाओं और उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में प्रदावक और संरचना के इंजीनियरों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बालकों लर्निंग सेंटर में आगजनी के खतरों के प्रति जागरूक रहने और उनसे बचाव के उपायों पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रदावक और संरचना के 30 कार्यपालकों व अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जो बिजली की लाइनों से संबंधित कार्यों, बिजली के उपकरणों और रासायनिक पदार्थों के कार्यों से जुड़े हैं। Building having a height of more than 15 meters should be certified. All vertical wiring. There is a break in the installation, there is a angle of the cable, and there is a release from that particular cable. In that particular kind of building should be certified by electrical inspector. I have to wear. So this is not clear. And what rule it is given? There is a number of exactly cannot tell right now. What is the number of that rule? If we add water to it, because of the density of the soil, it is lesser than water, so it will float over the surface of water. So fire will not be extinguished. So second possibility is also ruled out. We cannot remove fuel, we cannot remove heat. So what are we left with? We are left with only air. That's what we can remove. So what we can do, we should add an agent or extinguishing media which should float over the surface, which is lesser in density as compared to this oil. So what we have here is foam type extinguisher. Of course, this foam type, I am just explaining with an example. This foam type extinguisher, of course, cannot extinguish this oil. So it is totally different than other projects by using this extinguisher. This cap is holding this cartridge. Of the first 3 kinds of extinguisher, the same kind of cartridge is there. So once you push this plunger, that gas from this cartridge will be released through pores, and that will pressurize the contents of this extinguisher, and that will be coming out through the discharge, and it will be going to extinguish the fire. In first 3 kinds of extinguisher, the major disadvantage is that once you have pushed the plunger, all the contents will be coming out automatically, and until unless this extinguisher is empty, it won't be, you will not be in a position to stop it. The advantage of this kind of extinguisher is that it is empty, and inform fire department or somebody from your department might have used it, inform fire department so that they can fix it. Extinguishers are not going to be used always, only once they are supposed to be used. So always we should keep the date for the extinguisher very clear. So it is totally different than other projects by using this extinguisher. This cap is holding this cartridge. Of the first 3 kinds of extinguisher, the same kind of cartridge is there. So once you push this plunger, that gas from this cartridge will be released through pores, and that will pressurize the contents of this extinguisher, and that will be coming out through the discharge. इस कार्यक्रम में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अग्नि दुर्घटनाओं के कारणों और उनसे बचाव के तरीकों पर चर्चा की गई और प्रतिभागियों की अनेक शंकाओं का निराकरण भी किया गया। विभिन्न प्रकार की आगजनी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए आग लगाकर उस पर नियंत्रण पाने के उपायों का प्रदर्शन भी किया गया। तो रेसिड्यू कुछ नहीं रहेगा, ब्रेक करना पड़ता था, उसको उल्टा करके पकड़ना, अब रिमूव भी कर दिया सर। कारखानों में विभिन्न प्रकार की आग से संबंधित दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए अलग अलग रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन सब से अलग हटकर किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना को टाला जा सके, इसके लिए यह कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होगी। एक
छोटी सी चिंगारी सब कुछ स्वाहा कर देती है और गर्मी के मौसम में तो आगजनी के खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। कारखाने के भीतर अलग अलग कार्यस्थलों पर आगजनी के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालते हुए संकाय सदस्य बालको फायर प्रबंधन के प्रबंधन प्रशिक्षु दीपक शर्मा ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। बाद में श्री शर्मा ने आग बुझाने के लिए विभिन्न रसायनों की उपयोगिता का प्रदर्शन भी किया। We are having oxygen and we are not having heat. So fire triangle, fire pattern will not be completed. So what are the various sources of ignition, source of ignition to start the fire? Smoking. It may be one of the reasons for origination of fire. Second, hot surface. Fire alarm will be there. So those who are working in that particular place, they will immediately attack to the fire. Then you are at work, first place you are. You are the first person who will fight the fire. After that, those who have been exiled from that place, they will inform to the fire brigade and the fire brigade will come and basically depend upon the combustible material which is burning. Fire is the composition of four basic materials, four basic components. Fire has first fuel, second heat, third oxygen, fourth chain reaction. So it will be represented by another diagram. One side, AC fire, overheating of appliance fire, transformers, rectiformers fire related to class C. Carbon dioxide is the effective extinguishing agent. Yes, sir. Sir, in our